Hello everyone and welcome to our YouTube channel Humanities Adda. In this video, we are going to revise chapter 3 of class 6 history NCERT book, and I hope you have read this chapter, you have read this book before watching this video, because this is going to be the revision of this book and important points will be discussed which are relevant for exams perspective, basically specifically UPSC prelims perspective. Okay, so let us begin with this. In this first section, the story of Harappa, nothing is important, and just you have to remember that the site Harappa is located in present day Pakistan. Second thing is that why Harappan civilization, because it was the first site to be excavated. यहाँ पे सिर्फ आपके 6th NCERT में यही है. टाइमलाइन इसकी जो है आप इस पे मत जाइए, because it is very vaguely given, so you can just go through it just 4700 years ago. Ultimately you will again be reading this chapter in 12th NCERT, so you can either simultaneously go through that book for this chapter, or you can read that later on. Now, what was special about these cities? First of all, we will read about the location. कहाँ कहाँ पे ये sites located है. तो आप देखोगे कि पंजाब एंड सिंध वाला जो रीजन है पाकिस्तान में वहाँ, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया. And you will also find sites in UP and Jammu. When you read the 12th NCERT, you can see there. अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स, यूनिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो पॉटरी है आपकी, जो हरप्पन पॉटरी, दैट इज रेड इन कलर, एंड डिजाइन्स जो है आपको ब्लैक में देखने को मिल जाएंगे. देन यू हैव दी स्टोन वेट्स, cubical in shape and made up of a stone known as chert. Then you have the seals made up of a stone known as steatite. Special beads हैं, जिससे ज्वेलरी बनाते थे ये लोग. कॉपर टूल्स हो गए आपके, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स हो गए. Now we will talk about the what was special about these cities. Cities इनकी generally आप देखोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी. वेस्टर्न पार्ट जो था आपका वो छोटा था, बट इट वाज हायर, एंड आर्कियोलॉजिस्ट इसको सिटाडेल बोलते हैं. ईस्टर्न पार्ट आप देखोगे इट वाज लार्जर बट लोअर, एंड दिस इज कॉल्ड एज लोअर टाउन. देन आप देखोगे कि ये जो दोनों ही आपके सिटाडेल एंड लोअर टाउन है, दे वर वॉल्ड एंड वॉल्ड थे, और बेक्ड ब्रिक से इनको वॉल्ड किया जाएगा, फोर्टिफाई किया जाएगा. एंड when you will see look at the technique how these bricks were laid, so you will see that the bricks were laid in an interlocking pattern, and because of this interlocking pattern the walls were very strong. Now we will look at some of the structures that were present on the citadel. सबसे पहले हम मोहनजोदारो वाले सिटाडेल की बात करते हैं, और यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रेट बाथ. तो इसमें आप देखो कि ग्रेट बाथ प्रेजेंट है, ये लाइंड है ब्रिक से, प्लास्टर से कोटेड था. इट वाज वाटर टाइट, बिकॉज नेचुरल टार की आपको यहाँ पे लेयर देखने को मिल जाएगी. स्टेप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे नॉर्थ एंड साउथ दो साइड से. रूम्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, बट इन योर 12th NCERT इट इज रिटन दैट देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड. सो आई सजेस्ट यू टू गो विथ 12th NCERT. वाटर आप देखो कि एक वेल से लेके आया जाता था, विच वॉज लोकेटेड इन वन ऑफ दीज रूम्स. जो आपके 3 साइड पे रूम्स लोकेटेड थे उन्हीं में एक रूम वेल लोकेटेड था. फिर ड्रेन किया जाता है इसको बाद में. अब आप देखोगे कि परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, बिकॉज दिस वाज लोकेटेड इन सिटाडेल पोर्शन. ऑब्वियसली इट वाज मेंट फॉर इम्पोर्टेंट पीपल, एंड एक स्पेशल ओकेजन पे इस पे डिप ली जाती थी. सो आर्कियोलॉजिस्ट से दैट दिस वाज दिस टैंक हैड सम रिचुअल, मतलब रिचुअल के लिए रिचुअल बात ली जाती थी इसमें, एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका. अदर सिटीज की बात करें तो कालीबंगन एंड लोथल का जो सिटाडेल एरिया है, वहां पे आपको फायर ऑल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे. And when we consider Mohenjo-daro, Harappa and Lothal, so there you will find elaborate storehouses. This is it for this section. Now house, drains and streets. घरों की बात करें, कोर्टयार्ड आपको मिलेगा. कोर्टयार्ड के अराउंड आपको रूम्स देखने के लिए मिलेंगे. सेपरेट बेथिंग एरियाज मिल जाएंगे, एंड in most of the houses, in some houses you will even find wells, and you will read about more the houses in class 12th NCERT. I'm not referring to it over here, because ultimately you have to read over there. Now drains जो है आपकी वो कवर्ड रहेंगे, एंड स्ट्रेट लाइंस में थी.
जेंटल स्लोप रहेगा आपका ड्रेन का, ताकि वाटर इसमें से फ्लो कर सके आराम से। स्मॉल ड्रेन्स बड़ी ड्रेन से कनेक्ट होगी। ड्रेन्स में आपको टाइम कवर्ड थे, लेकिन उसके आपको इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन होल्स मिलेंगे, सो दैट टाइम टू टाइम इनको क्लीन किया जा सके। एंड ऑल थ्री द हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. It is written in your this book, but ultimately in your 12th again something different is written, and it is written that drains and streets were laid down first and then the houses were constructed. So I would just suggest you to go through both the sentences once again. Now, life in the city, we will talk that according to the archaeologist, people were there, and someone was there and who planned the city, and and the construction of special buildings. So they were probably the rulers, and according to scholars also, they were probably the rulers. Rulers, it is likely कि rulers जो है distant land में, different lands में लोगों को भेज रहे थे, officials को भेज रहे थे basically अपने, to get metals, precious stones and other things that they wanted. You can just say that they were importing goods for valuable objects, import कर रहे हैं अपने लिए, gold and silver, beautiful beads for themselves, luxurious objects. Scribes आपको मिलेंगे जो seals prepare कर रहे थे. Basically these people are they know writing. These people are scribes, those who know writing. ये लोग seals prepare करेंगे, and even wrote on other material, maybe perishable material पे भी लिख रहे होंगे. Then क्राफ्ट पर्सन्स होंगे आपके, मेन एंड वुमेन बोथ, कुछ वर्कशॉप पे काम करेंगे या फिर घर पे भी काम कर रहे होंगे, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा. टेराकोटा टॉयज आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड द चिल्ड्रन दे विल बी प्लेइंग विद देम in Harappan civilization. And these craft persons, they will be procuring raw material from different areas. So this is again आप देखोगे different areas से raw materials procure किया जा रहा था. New crafts in the city, here we will see कि मटेरियल कौन कौन सा यूज कर रहे हैं ये लोग जो क्राफ्ट के लिए. तो आप देखो स्टोन, शेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर. कॉपर एंड ब्रॉन्ज ये लोग यूज कर रहे थे टूल्स, वेपन एंड ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. Now, most striking finds are those of beads, weights, and blades. Here we can see the weights. They are cubical in shape, and they are made up of, a stone chert. The Harappans also made seals out of stone. Stone का नाम है steatite. Generally rectangular seals हैं, और उस पे आपको animal carved देखने को मिलेगा. You will also find the Harappan script. आप देखोगे पॉट्स भी बना रहे हैं, रेड पॉट्स हैं, ब्लैक डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा. कॉटन के बारे में बात करें, मेहरगढ़ वाले रीजन में फ्रॉम अबाउट 7,000 years ago cotton was grown. Actual pieces of cloth were found attached to a lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. So you are also getting actual pieces of cloth. Archaeologists have also found spindle whorls. Spindle whorls are used to this thing. ये एक तरीके से आपके स्पिन करने के लिए यूज किए जाते हैं थ्रेड. So these are also found in of terracotta and of faience. Faience material को अगर हम देखें तो these are not found naturally. This material, फैंस को बनाया जाता है आर्टिफिशियली. एक गम होता है, यूज किया जाता है, जिसको शेप करने के लिए सैंड और पाउडर्ड कॉर्ड्स को इनटू एन ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट्स वर देन glazed, resulting in a shiny glassy surface. कलर जो होगा वो इसका ब्लू या फिर सी ग्रीन रहता है. देन आप देखोगे कि ये जो है, जो क्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, ये मोस्टली दे वर द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट जो थे आपके, they were producing these things. Now we will see in search of raw materials. कौन सी रीजन से कौन सा raw material they were procuring, and just a second. Now, for instance, you can read the paragraph above. Copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant lands. कॉपर आप देखो राजस्थान में खेतरी माइंस वाला रीजन है, वहां से ये लोग प्रोक्योर कर रहे थे, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया. टिन दे वर प्रोक्योरिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान. टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज वाज मेड.
Gold could have come all the way from present day Karnataka. Gold को कर्नाटक से procure किया जा रहा था, and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. तो आपके प्रेशियस स्टोन्स हैं वो प्रेजेंट डे जो गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान वाले रीजन है वहां से प्रोक्योर किया जा रहा था. फॉर इंस्टेंस फ्रॉम गुजरात यू विल सी इंपोर्ट ऑफ कार्नेलियन. अफगानिस्तान वाले रीजन से लैपिस lazuli वाज ब्रॉट. ना फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज. तो आप देखोगे कि ये क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे एंड rearing of animals was also done. But the people who grew crops and reared animals were not living in the cities, but they were living in the countryside. That means outside the cities, in the outskirts of the cities, and they exchange the agricultural products with the people of city for their, the services of the city people and the objects, the crafts, crafts and other things like that. तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हो गया था एंड दे बोथ वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो नेक्स्ट थिंग इज दैट remains of plants से हमें पता चलता है कि these people they were growing wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. Plow जो है एक new tool. It was used to dig earth for turning the soil and planting seeds. अब रियल प्लाव हमें मिला नहीं है जो वुड का बना होगा and ultimately it have it would have decayed. So toy models have been found, and the toy models have been found from Cholistan and Banavali. Banavali is in Haryana. It is in Banavali, yeah, it is in Haryana. So you will see that some form of irrigation was also required because the Harappan sites, they are located in semi-arid region. तो आप देखोगे कि some form of irrigation facilities were also there. तो irrigation facilities के बारे में आप क्लास 12 के एनसीईआरटी में you can look up to that book. And this means that water was stored and supplied to the fields when plants were growing. So you can ultimately think of irrigation facilities that it was there. They also reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around the settlements so that they can, go for, rearing the animals. Okay, again, you can just go through this paragraph because there is nothing that can be asked in MCQ directly. But on the other hand, fruits के बारे में आप देख लो that they collected fruits like bear. They also caught fish, hunted animals, wild animals like the antelope. अब we will talk about the Harappan towns in Gujarat in a bit detail. The city of Dholavira. Dholavira was located on Khadir Beth, also spelled as Beth, in the run of Kutch. ये वाले region में धोलावीरा जो city है वो located है site where there was a fresh water and fertile soil. Unlike some of the Harappan sites which were divided in two parts, this is an exception. Dholavira was divided into three parts. धोलावीरा आपका 3 parts में divided है and each part was surrounded by massive stone walls. You have here stone walls and not the brick walls. Just focus on this point because this is where you may get confused and this is where UPSC may frame a question. Okay, so Dholavira was divided into 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. Gateways were there. There was also large open area in the settlement where public ceremonies could be held. ये धोलावीरा की बात हो रही है. It other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of a white stone and perhaps inlaid in a board. This is the signboard where you can find 26 letters. Okay, so this is also found in Dholavira. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seeds. तो ये एक यूनिक फाइंड है. आप देखो सिटी ऑफ लोथल, इट इज आल्सो लोकेटेड इन गुजरात, stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat close to the Gulf of Khambat. एक रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में हमें देखने को मिल रहा है, एक गल्फ ऑफ खंबत वाले क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबत वाले रीजन में मिल रहा है. And it was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. तो लोथल जो लोकेशन है आप देखोगे कि ये कार्नेलियन के सोर्स के पास में था, इनफैक्ट स्टीयरटाइट के सोर्स के पास में भी था. दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल. ये तीनों के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था.
There was also a storehouse in the city, as we have already done in the above paragraphs. Many seals and ceilings were found in this storehouse. Seals and ceilings हमें storehouse में मिली. अब यहाँ देखो, you will see a dockyard at Lothal. Lothal में हमें dockyard भी मिला. This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea and through the river channel. So there they had this kind of trade relations with the Mesopotamian civilization, and this trade relation was through the sea route. तो आपका जो डॉकयार्ड है यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि शिप्स जो हैं वो आके डॉक करते होंगे, यहाँ पे आके एक तरीके से गुड्स की अनलोडिंग एंड लोडिंग होती होगी. इट इज पॉसिबल. नाउ अ बिल्डिंग दैट हैज बीन फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स. एक बिल्डिंग मिली है जो एक वर्कशॉप थी, प्रोबेबली बीड मेकिंग के लिए. Pieces of stone, half-made beads, tools for making beads, and finished beads have been also found here. So this is, sorry, you can say about the bead and bead making. नाउ सील्स एंड सीलिंग्स क्या है? सील्स आप देखो कि मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स. वो सील से आप बैग्स पे क्ले लगा के उसको स्टैम्प कर दो तो उस पे एक प्रिंट चला जाएगा. दैट इज योर सीलिंग. इंप्रेशन जो है वो आपकी सीलिंग है. और सीलिंग अगर आप कुछ गुड्स भेज रहे हो, इफ दैट इज इंटैक्ट, दैट मींस योर package have not been, your package has not been tampered and nobody has taken out anything from that. You can be assured of that. Now we have the mystery of the end. We will talk about the end of the civilization. So एंड जब स्टार्ट होता है इन अराउंड 19 आफ्टर 1900 BC ऑनवर्ड्स, यू विल सी व्हाट वर दी सिम्टम्स. आप देखोगे क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एक तरीके से डिक्लाइन के, वो क्या क्या थे. पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड. रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर. In Mohenjo-daro, we find the garbage piled up on the streets, drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. So these are some of the characteristic features. What was the reason? तो scholars suggest करते हैं कि rivers जो है dry up हो गई थी. कुछ बोलते हैं नहीं, deforestation हुआ था. Now this could have happened because fuel was required for baking bricks. ये वो हो सकता है क्योंकि बिग ब्रिक्स बनाने के लिए आपको फ्यूल रिक्वायर्ड था. ट्रीज उसके लिए काटी होंगी इन्होंने. इट माइट बी पॉसिबल. एंड कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए भी फ्यूल रिक्वायर्ड था. And besides, grazing by large herds of cattle, sheep, and goat may have destroyed the green cover. In some areas, there were floods. Floods का भी एक ये कहा जाता है, cause बताया जाता है floods को भी. But none of these reasons can explain the end of all the cities. तो हर सिटी का मतलब हर सिटी के लिए ये रीजंस नहीं एक तरीके से वैलिड है. फ्लडिंग और ड्राइंग अप वुड हैव हैड an effect in only some areas. It appears as if the rulers lost control. तो ये भी appear होता है कि rulers ने अपना control lost कर दिया होगा. In any case, the effect of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. जो आपकी न्यू सिटीज इमर्ज होगी वो अब आपकी महाजनपद वाले जो पीरियड है 600 BC onwards, they will emerge. You will not find the city life in the early Vedic period and later Vedic period. So Vedic period में आपको city life नहीं मिलती है. So this is it for this chapter. I hope we have revised everything. Although we were not supposed to read the last portion about the end and all, because this is not going to be asked in the MCQ, I guess. But anyways, we have done it. It might be helpful for you, this thing, GS paper 1. So just, I hope you like this video. If you like this video, do press the like button and do share this video with your friends, and do subscribe to our channel. Thank you. Thank you so much.